Hi guys, how are you all? I hope you all are doing really amazing. So, now I'm starting with question and answers of your economics. All the chapters I'll cover. Okay, we'll cover जो भी जितने भी chapters है. We'll discuss the question and answers for you people. So, आफ्टर यू फिनिश द चैप्टर आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं. एक होता है इंटेक्स क्वेश्चंस जो चैप्टर के बीच बीच में आता है, एंड यू हैव टर्मिनल एक्सरसाइज जो आपके चैप्टर फिनिश होने के बाद आता है. ठीक है. सो हम यहाँ पे कौन सा डिस्कस करने वाले, क्या हम दोनों डिस्कस करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट. जब हमारे पास इंटेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स बुक के पीछे दिए होते हैं तो वी कैन ईजीली गेट देम. ठीक है. पर टर्मिनल एक्सरसाइज के आंसर्स आप लोग के पास नहीं होते, इसलिए आई विल डिस्कस ओनली टर्मिनल एक्सरसाइज के आंसर्स. ऑल राइट. नाउ क्या इसका मतलब है मैं इंटेक्स कभी भी डिस्कस नहीं करूँगी? ऑफ कोर्स नॉट. इफ़ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी इंटेक्स क्वेश्चन में डाउट आता है, यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन एंड वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हूँ. ओके. अगर आपको जानना है आंसर ऐसे कैसे आया, कोई प्रैक्टिकल चैप्टर है जहाँ सम्स करने होते हैं, उसमें आंसर्स आपको नहीं समझ आ रहा, यू कैन आस्क मी. आई कैन डिस्कस दोज क्वेश्चंस. बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपसे सारे क्वेश्चंस जो भी इंटेक्स के दिए होते वो डिस्कस करूं, बिकॉज देन इट मेक्स नो सेंस. ठीक है. तो जो आपको हार्ड लगता है, जो आपको समझ नहीं आता है, वो अगर हम डिस्कस करें इंटेक्स के तो इट वुड बी बेटर. सो नाउ विल मूव ऑन टू डिस्कसिंग टर्मिनल एक्सरसाइज आंसर्स. But make sure that before watching terminal exercise answers, you are done with lectures. Okay. Then you come on to this question and answer, and then you solve past year solved papers. What happens with that? अगर आप ऐसे फ्लो में जाते हो that you finish the chapter first जो अवेलेबल है ऑन द चैनल, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो. ठीक है. देन जब आप सॉल्व करते हो, आपका जो अंडरस्टैंडिंग होता है चैप्टर का वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप हर चैप्टर में लेक्चर करते हो, फिर क्वेश्चन आंसर करते हो, एंड देन यू मूव ऑन टू सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपके इकोनॉमिक्स में ईजीली, आई मीन हर सब्जेक्ट में अगर आप ऐसे करते हो, यू कैन ईजीली स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स. लेट अस नाउ स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स. एंड आई एम श्योर आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स देख लिए होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन नाउ. First question is distinguish between goods and services. So we will make a table and distinguish करेंगे कि goods क्या रहते हैं and services क्या होती है. So we have 4 pointers इस answer के लिए. First point is that goods are tangible in nature, that is they can be seen and touched, whereas services are not tangible in nature, they cannot be seen and not be touched. Second point is there is a time gap between production and consumption of goods as they are produced first and consumed later, of course, whereas services mein there is no time gap between the production and consumption of services, that is why they are produced and consumed simultaneously. Of course हम सर्विस को ऐसे स्टोर नहीं कर सकते कि डॉक्टर सर्विस दे रहे हम बाद में ले, जब वो सर्विस दे रहे होते तभी हम वो सर्विस लेते. थर्ड इज दे कैन बी goods का थर्ड इज दे कैन बी स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, बट सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड. फोर्थ इज दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. गुड्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वेराज सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफ़र. मतलब जो सर्विस एक डॉक्टर दे रहा है वो सिमिलर सर्विस दूसरा डॉक्टर नहीं दे सकता है, राइट? बिकॉज इट डिफर्स, एक पर्सन टू पर्सन अलग होती है सर्विसेज, हेंस इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. Moving on to the second question, distinguish between economic goods and free goods. So only one pointer answer is this: economic goods are limited in supply in relation to their demand. They also command a price in the market, whereas free goods are those goods which are available in unlimited quantity and do not command a price in the market. Moving on to the third question, which is distinguish between consumer goods and producer goods. Consumer goods are those goods which satisfy consumers' want directly, okay? And producer goods are those goods which help in producing other goods. They satisfy consumer wants indirectly. You can also add examples here, like consumer goods में you can take anything readily available like books, table, okay? And producer goods में you can take the wood, okay? We use wood to make table, chairs, so wood is the best example. Another distinguished question, fourth question is
Distinguish between single use and durable use goods. नाम से ही पता चलता है single use goods are those goods which can be used only once. They are finished only in one use, whereas durable goods are those goods which can be used again and again for a लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जो चीज़ आप खाने की हो गई वो सिंगल यूज़ हो गई, एंड अदर थिंग्स जो भी रहते हैं दोज आर ड्यूरेबल यूज़ गुड्स जो लॉन्ग टर्म चलती हो. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज़ द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. कम से कम डिस्टिंग्विश वाले तो ख़त्म हुए. ओके, सो क्या सिग्निफिकेंस है गुड्स एंड सर्विसेज का? Okay, goods and services have a multidimensional role to play in an economy. The role can be stated as human wants. It means the availability of different goods and services like clothes, shoes, electrician increases, it will satisfy more human wants. Okay. Second use क्या है? Production के लिए we can produce more if we have more and better machinery, raw material, tractor. Similarly, we require more of transportation service, banking and insurance service. And lastly, for investment purpose, if the production of goods and services is more, it is likely that the consumption will be more and the investment will also be more. Done for the chapter, that too in less than 5 minutes. I hope it was helpful to you. Until next time we meet, keep studying and happy learning.